Dear students, in this lecture we shall learn about the price discrimination, how it is done in the market, but more importantly, how we can explain this by using mathematical tools. Let us see. As we can guess that price discrimination is done by the monopolist. And yes, we can guess that monopolist can do the price discrimination. Here we are assuming that there are three markets जिसके अंदर monopolist price discrimination कर रहा है. Definitely वो अपनी output को भी different amounts में sell करेगा in these three markets. So you saw that there are three different demand structures that are available in the market and they are observed, जिसकी basis पे the monopolist is doing the price discrimination, remembering the elasticity of demand in these three markets. But we can also expect that the revenue and perhaps cost can be affected by these demand structures. But this is our expectations. Once we go into the mathematical equations and further analysis, तो हमें पता चलेगा कि revenue structures can be affected because of the change in the demand structures, but cost side will remain the same. And that is because demand is different, but cost is the supply side factor. And it doesn't get affected no matter there is a different set of demands in different markets. So therefore, revenue, as you can see, is having a decomposition और उसके अंदर three revenues हैं, R1, R2, R3, और वो तीनों different demand structures के ऊपर base कर रहे हैं. But when we talk about cost, it is collectively taken, और हमने यही कहा कि cost structure is not different because plant is the same or the technology or the way of production is the same, no matter different demands are there. Now the profit function is like this. This is revenue and this is cost, उसका difference. और इसके develop करने के बाद we calculate the first order conditions. Now आप देख सकते हैं pi 1, pi 2 will be afterwards and there will be pi 3 as well, जो कि हम आपकी exercise के लिए अभी रख देंगे. But pi 1 is to be solved for your understanding. When we solve using the derivative with respect to q1, तो इसका जवाब हमारे पास r1 बार q1 होगा. इसमें चूंकि q1 नहीं है, इसका आंसर डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव भी 0. इसके अंदर चूंकि q1 भी है, q2 भी है और q3 भी है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. But once we see that we are dealing with q1, we know कि q1 पे भी डिपेंड करता है और फिर q डिटरमाइन करता है c को. इसका मतलब है there are three variables जिसे हम चेन रूल के जरिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो आपने देखा q1 डिटरमाइंस q और q डिटरमाइंस कॉस्ट. हाउएवर ये जो एक्सप्रेशन है हम जानते हैं कि इट डज डिमांड और इट इज़ द सेकंड और द थर्ड डिमांड स्ट्रक्चर. द total output of the firm will not be affected no matter demand structures are different. इसीलिए पहला जो Q1 है या Q2 है या Q3 है, इनका असर वही होगा, इनमें जो चेंज होगी उसका असर वही होगा जो कि चेंज इन ओवरऑल आउटपुट है. Therefore, this is equal to 1. Change in Q1 means change in Q. So they get cancelled out and we have 1. इसको हम c बार q की फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारे पास ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड वे में इस तरीके से लिखा जा सकता है. इसी तरीके से जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा दैट pi 2 एंड pi 3 कैन बी कैलकुलेटेड q2 के लिहाज से डिफरेंशिएट करके और q3 के लिहाज से डिफरेंशिएट करके ओरिजिनल प्रॉफिट फंक्शन को. ये आपके लिए DIY है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि आप इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली यू विल गेट दिस सेट ऑफ टर्म्स. इन तीनों टर्म्स को अगर मैं इकट्ठा कर लूँ, तीनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी क्योंकि तीनों फाइनली इसके बराबर है सी बार क्यू के. और सी बार क्यू का मतलब मार्जिनल कॉस्ट, इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू थर्ड मार्केट में, मार्जिनल रेवेन्यू सेकंड मार्केट में और मार्जिनल रेवेन्यू फर्स्ट मार्केट में. नाउ इससे जो हमारे पास Q1, Q2 और Q3 की वैल्यूज आएंगी, इक्विलिब्रियम वैल्यूज होंगी, और दैट सेट ऑफ वैल्यूज इज दैट सेट ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज जिसके ऊपर फर्म का, मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, जहां पर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा होगा डिफरेंट प्राइसेस P1, P2
और P3 चार्ज कर रहा होगा. So you can take a numerical from your book and do it for the sake of further clarity. Thank you.